Good afternoon, everyone. My name is Rahul Jawahar. I head sales in Arthmate. I have over 12 years experience in banking. I work with Standard Chartered Bank, SDFC, ING. And in 2018, I started my journey in P2P lending. So I think almost 5 years in P2P industry. So in last 5 years, I'm sure you would have heard or known about P2P or maybe doing P2P. But पिछले 5 सालों में काफी change आया है. The model has changed. Earlier it started with a platform-based model. जहाँ पे you used to pick up the borrower and invest. Then a lot of cycle we have seen through COVID, pre-COVID, all those cycles. So there are a lot of changes happen in a very positive way. So पहले जब मैं IFAs के पास मीटिंग होती थी तो एक सवाल बड़ा कॉमन होता था कि what is the downside of this asset class? Because I'm sure चाहे वो real estate हो, equity हो, एक downside होता है. But now those questions are answered in a way that people, those who started pre-COVID, they have also seen the performance and all that, and now they are the cusp of growing very fast and scaling the business. So if you look at the numbers wise also, it's true because अभी कुछ 20,000 crore का disbursement हुआ है industry में, and 60 to 70% has come post COVID. So उसके बाद एक next level का confidence build हुआ है, and you will see a lot of institutions such as national distributors, then fintechs, they are also participating. Like Credit का है, भारत पे they started, new banks, FI, all these organizations, they have started having P2P. So I'll take you through. First is, for the benefit of group, what is the potential of P2P within the fintech space, because P2P is a part of fintech ecosystem, and the value proposition and future potential of P2P lending. And then I will highlight some of the key regulation around P2P and how it actually mitigates the risk. And the fourth is, what is the Arthmate advantage for you? So within the fintech, so P2P can't grow in a solo, right? So there are a lot of digital infrastructure we have seen. There are a lot of other growth drivers which require P2P to grow. अगर mobile phones नहीं होता, अगर internet penetration नहीं होता, और digital infrastructure नहीं होता, so it would have taken a lot of time. But today it's progressing because of the fintech ecosystem is also growing, right? And globally it's also true. It's one of the fastest growing BFSI globally. So there is a company called Zopa who started P2P in 2005, and today they are a digital bank. So you can understand the scale. There is a US-based company called Lending Club. They have disbursed more than $80 billion of funds. So वहाँ पे जो personal loan है या education loan refinancing हो रही है, so all these are the P2P players who are leading in and they are doing better than a bank, right? Most of the globally जहाँ भी P2P है वहाँ पे regulated by central bank है, and if you see in India also at a very early stage in 2017 RBI came and regulated this. There is a reason why it gets regulated by central bank. Otherwise, it may go haywire, what we have seen in China. So it's a two-sided marketplace. Okay. So if you see the two-sided marketplace, जहाँ पे दोनों साइड में retail play है, वो बहुत तेजी से बढ़ता है, because it grows on both the side, right? For example, Amazon, Uber, दोनों साइड में रिटेल प्ले होगा, वो बहुत तेजी से बढ़ता है. सो अगेन इट हैज आल्सो टू साइड्स. एक तरफ बोरोर हैं, दूसरी तरफ लेंडर्स हैं, एंड बोथ द साइड्स आर रिटेल, दे आर नॉट इंस्टीट्यूशनल. In some of the
like in US P2P models में institution have started participating. UK में government भी participate करती है, जैसे हमारे यहाँ मुद्रा लोन है. So maybe in the future government can participate mudra loan through the P2P because it's one of the transparent system. So in India we feel the same growth pattern because technology wise we have seen what we have done in past and we are growing in all length and breadth in the technology across, not only in fintech but also otherwise. We have a largest young population and they are using all the smartphones. Then internet penetration is very high and the data is cheap. So all this combination plays out a long way where we can see the future growth for P2P in India. And India is one of the third largest fintech country today. So these are certain things that इसमें fintech grow होगा and then there will be a parallel for P2P also. Now we look at the potential of P2P and what is P2P, and so quickly highlight, I'm sure you would know this. So the genesis of P2P is to provide value for both the parties. So there are two parties, lender and borrowers. Okay. So जब जोपा ने इसको start किया था, so उन्होंने कुछ observation किया. Basically, what they observed is when we put money in a deposits or give out to a bank or maybe financial institution, they use the same money for borrowing. Okay. So, but the ultimate risk lies on investor. Risk investor का ही है. उसमें कोई भी central bank or government will not come and if anything's bad happens. So, but the risk to reward is not that much. So let's say your deposit is like 4 to 5%, and when you get lending is 17-18% kind. So there is a huge margin that all these intermediaries they make. But this is not the problem. This is a business model, so this should not be the problem. The problem is all the profits are getting concentrated to some limited stakeholders, those who are maybe the promoter and all that. So how can we democratize it, right? The ideal way of then this idea of P2P model came out where they thought if technology can be a whatever bank, so bank does certain processes. एक lending के लिए बैंक के कुछ processes होते हैं. First is like they source the borrower, okay. Then they underwrite it, then they price the borrower and service करते हैं, right? अगर इस चीज को अगर हम digitally कर सकते हैं, so there are high chance that we can replace the intermediary and pass the margin to the users, both the parties. So this is the model. So it creates value because इसमें जो intermediary का जो margin है, वही margin pass होता है. So lenders get a higher return and borrowers get a lower ROI at a demand. When the demand and supply will play out, it will happen. So now you have, along with real estate, along with your debt, equity and all that, but it's also a regulated asset class where you can, diversify or allocate some of your fixed income funds of your customer to P2P. And it's very stable. So this is about lending. So P2P, but basic of this P2P is lending. There's lending का ही काम हो रहा है. Lending is a century-old model. It's everybody knows that lending में पैसा बनता है. In earlier chart, no, if you could add one column, that is the taxation in this. Yeah. Like stock, we have given, no, this return, risk, liquidity. Right. Certain, because we are all MFTs, so MFTs Sure. also are calculating short term, long term. Yes, noted, sir. So
बट ऑल दिस वाइल ये जो लेंडिंग का बिजनेस है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रही थी, चाहे वो बैंक हो या NBFC हो. ओके, नाउ विद दिस मॉडल रिटेल इन्वेस्टर कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट एंड अर्न लाइक अ बैंक. सो इनफॉर्मली हमारे यहाँ बहुत सारे साहूकारी का काम चलता है. सो इनफॉर्मल लेंडिंग तो अभी चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पर. And lending is a very big business, right? So out of 10 companies, as per the market capitalization, you can see 4 are doing lending the business. So what is the future? I can only say that we have a large population. They will become a productive, and the aspiration and all that will build a very high demand for credit in India. And digitally it's projected, there are certain news that 500 plus billion, but current situation is not good. हमारे देश में करीब $400 billion का हर साल अनमेट डिमांड है. ओके, जो कि जो एड्रेसेबल बोरोवर है, मतलब जिसको आप लोन दे सकते हैं, राइट, वहाँ पे पेनिट्रेशन लेवल इज एज लो एज 5 to 10%, 5 to 7%. So all सारे banks, financial institution, MFI सारा मिला के भी we are not able to address it. ऐसा नहीं है कि इस borrower अच्छे नहीं है, but the cost is the factor, the reach is the factor. Okay, so now the technology based they are enabling and they are trying to reach out, and a company like us or P2P models, they are reaching to the last mile for giving out the credit. Now so every asset class has certain risk. Okay. So इसमें भी risk है, but at a very high level, I have put out this slide from the regulation. जो भी NBFC P2P का regulation है, उसमें there are certain prudential norms. So these are the on the right hand side, these are the norms and how it helps in mitigating the risk. So lending के business में there are certain risks which are more than a डिफॉल्ट रिस्क तो है ही, बट उससे भी बड़ा रिस्क होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ओके, नाउ वी हैव सीन इन पास्ट देयर आर एग्जांपल्स. यू कैन सी कि बहुत सारे चिट फंड में फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हुआ करते थे, राइट. एंड सिंस इट्स अ वेरी लेटेस्ट रेगुलेशन, NBFC का सबसे लेटेस्ट रेगुलेशन है, सो यू विल फाइंड दैट लॉट ऑफ सच उसको मिटिगेट करने के लिए इसको ध्यान दिया गया है. सो ऑल द ट्रांजैक्शन हैपेंस थ्रू एस्क्रो अकाउंट, जहाँ पे पैसा कभी भी P2P प्लेटफॉर्म के पास नहीं आता है. बैलेंस शीट लेंडिंग नहीं, आप पैसा नहीं आता, वी जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म. एस्क्रो अकाउंट से ही पैसा डायरेक्ट बोरोवर को जाता है, एंड देन द रीपेमेंट हैपेंस फ्रॉम बोरोवर एस्क्रो अकाउंट एंड मूव्स बैक टू योर लेंडर एस्क्रो अकाउंट. एंड देयर इज अ ट्रस्टी. Basically, trustee is the representative for the borrowers and lenders, right? So they validate the transaction, then only money can move. Okay. So let's say if escrow account is हमारे केस में ICICI बैंक में है, मैंने इंस्ट्रक्ट किया ICICI बैंक को कि इसका पैसा इधर डाल दो, इतना पैसा मुझे दे दो, तो नहीं होगा. So all we pass the instruction to trustee, and trustee further passes to bank, then the money moves. So ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीज़ों को काफ़ी हद तक यहाँ पे कंट्रोल करता है, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू वहाँ पे आता है जहाँ पे पैसे का कंट्रोल किसी इंडिविजुअल के पास आ जाए, राइट. सो मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट वी हैव सीन, राइट. सो यहाँ पे कभी भी कंट्रोल पैसे का नहीं है. नाउ द कंसंट्रेशन रिस्क, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट रिस्क. नाउ दिस लास्ट फियास्को ऑफ बैंक्स एंड NBFC व्हाट वी हैव सीन इज बिकॉज ऑफ दिस रिस्क. सो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 10 लाख कर दिया गया है. तो बाय डिजाइन उन्होंने कंसंट्रेशन को हटा दिया. आप कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़े SMEs यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोन का वैल्यू है, एक बोरो 10 लाख रुपए से ले सकते हैं. एंड देयर इज फर्दर टू फ्रैक्शनलाइज इट कि आपका एक लेंडर का पैसा ऐसा 50,000 रुपए से ज़्यादा एक बोरोवर को नहीं जा सकता है, 20% ऑफ द लोन वैल्यू. सो वो फर्दर फ्रैक्शनलाइज होता है. सो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क मतलब आपका 1 लाख रुपया अगर आपने एक को दिया, इसने डिफॉल्ट किया, जो कि पेपर के केसेस में होते हैं जितने भी डेट पेपर, बिकॉज यू आर गिविंग टू सिंगल एंटिटी,
Okay, whatever, even if it is a AAA, it's a single entity. So now the choice is कि उस एक entity को देना है या ऐसे हजारों लाखों लोग पैसा अपना बांट देना है. So now the asset liability mismatch. Now this is very talked about, lot of news about asset liability mismatch. So so the maximum loan tenure for any borrower on P2P platform cannot exceed more than 36 months. So यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे इन्वेस्टर जो है 1, 2, 3 साल के लिए लगाता है और बोरोर का जो टेन्योर है मोस्टली if you check with other platform also you will find 6 to 9 months और ऐसे ही एवरेज होता है. So this is there, and the default. So default all the loans which are disbursed from the P2P platform, it has to be reported. There is a reporting line to all the bureaus. So किसी ने अगर default delay किया है, so that will get reported, and that guy will not be able to take money from it. But default के बारे में every platform has their own this thing. So there are some advantage of retail lending over the institutional lending. ऐसा माना जाता है कि इंडिया का जो सबसे अच्छा एसेट क्लास है वो है इंडिया की आम जनता, right? So retail loans, retail borrowers. So why this is because of the fractionalization. Your money gets spread into large number of borrowers. Distribution is again a biggest risk because हमने देखा है 2018 में we had a flood in Kerala. We have seen cyclones, so maybe because of the natural calamities or some social, political, all this. So they have certain kind of risk. So your loan borrow should come from large number of cities, right? So that is possible through the digital way of sourcing the borrower. And diversified mix होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ मैं 750, 800 वाले सिविल वाले borrow करता हूँ. So you should have a complete mix, right? So not only in terms of industries, because economy की cycle सारे industry एक साथ grow नहीं करते हैं. There are some industries which will have a negative growth or maybe tepid growth, or So आपके borrowers सारे industry से आनी चाहिए. Again उसमें भी concentration limitation होना चाहिए. Tenure wise भी risk mitigation होता है. तो अगर short term का borrower है to long term, there are rate of interest ROI wise भी mix होना चाहिए. So all this. So if you see the classical example is banks, they have all kind of mix. Quickly, Arthmate Direct and how we are different from other peer groups is, so what we have seen from last 2.5, 3 years is ultimately जो पैसा है, जो underlying asset है, वो है borrower. पैसा उसी से कमाई हो रही है, right? But वहाँ पे एक shift आया है, okay, because of again the technology and fintech and all that, okay. वो शिफ्ट आप भी फील कर पा रहे होंगे, आई एम श्योर. वो शिफ्ट ये है कि पहले हम बैंक के पास जाते थे लोन्स के लिए. अभी ये सारे बोरोर्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अमेज़न हो, अगर आपको टीवी, रेफ्रिजरेटर या कुछ भी चाहिए, आपको EMI की फैसिलिटी अभी अमेज़न पे मिल रही है, या मेक माई ट्रिप हो, एजुकेशन लोन हो, मेडिकल, इस टाइप के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है. इवन अगर आप फूड ऑर्डर कर रहे हो वहाँ भी आपको लोन मिल रहा है, विच इज़ बाय नाउ पे लेटर. अगर आप ओला ट्रैवल कर रहे हो, सो देयर ऑल्सो वी आर गेटिंग. सो ऑल दीज आर क्रेडिट, ओके. सो ऑल दीज प्लेटफॉर्म दे हैव मिलियंस ऑफ कस्टमर्स. नाउ इमेजिन कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इज इट पॉसिबल टू माइग्रेट देयर, उनके प्लेटफॉर्म से फिर अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना और वहाँ पे फिर लेंडिंग करना, इट्स सो कॉस्टलियर, राइट? सो देन द कॉन्सेप्ट स्टार्टेड एंड इट्स अ वी कॉल इट कॉन्टेक्चुअल सेलिंग और एम्बेडेड फाइनेंस. सो उसमें क्या होता है कि हमने सीधा अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो एम्बेड कर दिया, चाहे वो भारत पे हो, चाहे चेकबुक हो, चाहे जितने भी जो इस टाइप के मेक ट्रिप एंड ऑल दैट, राइट? सो वहाँ से ही बॉर्डर सोर्स होता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है.
and this is how this is done. So why I am telling you that what we have built is a credit exchange model. Okay, क्योंकि एक साइड में borrower है, बैठा है, बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठा है, ठीक है. अभी किसी बड़े प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप करना है तो ऐसा छोटा अमाउंट लेके वो एंटरटेन नहीं करेगा, and that relationship will not be a sustainable relationship. Okay. So in order to make the relationship sustainable and make them in our terms, okay. So हमें सिर्फ मेरी P2P सप्लाई फॉर दैट मैटर किसी भी सिंगल कोई भी NBFC है या सिंगल बैंक है या सिंगल P2P है उससे काम नहीं चलेगा. ओके, यू शुड क्रिएट अ पावर हाउस ऑफ दिस सप्लाई. एंड हाउ वी आर क्रिएटिंग दिस, वी हैव क्रिएटेड ए क्रेडिट एक्सचेंज का मॉडल जहाँ पे हमने ये को लेंडिंग का प्लेटफॉर्म है एज पर द गाइडलाइंस. RBI की गाइडलाइंस में हम अपनी NBFC के साथ, बाकी we have tied up with the PSU banks, we have tied up with one of the largest systematically important deposit taking NBFC on our platform. Now we have created the power of supply, and now we are going and we have tied up with 40-50 large partners. उस segment का सबसे बड़ा partner, if you see, will be working with us and in our terms. So that is what this credit exchange help us. Again, P2P is one of the supply. So यहाँ से जब borrower आता है हमारे underwriting process से सारा filter होगी. So then there is a selector who actually identify कि उसको co-lending platform पे भेजना है, उसको हमारे NBFC में भेजना है या फिर P2P में भेजना है. Accordingly this is done. Otherwise also as a Arthmate we are also providing risk engine solution to other NBFCs. So उसमें काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं जहाँ पे हमने अपना खुद का रिस्क इंजन दिया है लोन के लिए. Then we are also doing trade cloud services for the fintech and other financial institution. So as a group we do deep underwriting. So basically we try to figure out three things: ability to pay, stability of this customer and the intent. Okay. So ability to pay में simple है कि उसकी क्या इनकम है और उसकी फिक्स ऑब्लिगेशन क्या है. उसके लिए आपका डेटा इनकम बेस्ड डेटा पे हम फिगर इट आउट करते हैं. एंड देयर इज अ फिक्स्ड इनकम टू ऑब्लिगेशन रेशियो, उस बेसिस पे हम पता करते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ दिस कस्टमर मींस कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट स्टेबिलिटी क्या है, पास्ट में कितने लोन ले रखे हैं, उसकी कितनी क्रेडिट लाइन है, उसका मिक्स क्या है. कि ऐसा तो नहीं है सिर्फ गोल्ड लोन ले रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो अनसिक्योर्ड लोन ले रहा है. व्हाट इज द मिक्स एंड ऑल दैट. सो वी गो डीप डाइव. इट्स जस्ट नॉट स्कोर बेस्ड. सो आपको 750 सिबिल स्कोर वाला एक बंदा है और एक 650 स्कोर का है, राइट. सो एट द आउटसेट यू विल से कि 750 वाला अच्छा है, बट व्हेन यू डीप डाइव देन यू विल फाइंड कि हाउ द जर्नी इज बीन, कि उसने 600 से मूव किया है ऊपर की तरफ या वो 800 से नीचे की तरफ आया, राइट. So this is the credit stability. Then we also look at the employment stability. So उसमें हम employability index वगैरह देखते हैं कि जहाँ पे किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, प्रोफाइल क्या है उसका, right? And then we use lot of data, all the traditional and also new surrogate scorecard that we create to do the complete underwriting. So basically we are in the business of pricing the borrower, right? Okay. So our risk rule engine price the borrower. So today the point is not the NPA or default. Default का तो business ही है. So how you take this default and how you build your pricing model, वहाँ पे ही सारा game, right? So let's say if I am pricing, if अगर किसी segment में अगर default 3% का है या 4% का है, उसको आपने एक प्राइसिंग किया 20% पे और कहीं पे डिफॉल्ट 6% का है. सो इफ यू आर एबल टू प्राइस एट 26% देन इट्स फाइन. बैंक भी ऐसे ही करती है. आप पर्सनल लोन लेने जाएंगे, जब मैं HDFC बैंक में था तो 9.99% पे देता था. वही क्रेडिट कार्ड पे आप देख लो, बिकॉज द डिफॉल्ट प्रोपेंसिटी इज हायर इन दिस प्रोडक्ट. सो इट्स ऑल अबाउट प्राइसिंग. सो वी आर प्राइसिंग राइट. सो हमने अपने NBFC से 2000 करोड़ का बुक से अपने खुद के पैसे से लेंडिंग करके नाउ वी हैव स्टार्टेड
our P2P platform. So almost 2.9 years, 2 million borrowers we have processed, 2,000 crore disbursed. So again, this is how we are able to make it, because we are lending at average 18 to 26%. Our average will be close to 22%. Then there will be certain default, okay, in the range of 1 to 2%, because we have we don't source borrower डायरेक्टली. तो हमारा कोई ऐप नहीं है ना हमारा कोई वेबसाइट है कि जहाँ पे हम एक से एक borrower, हमारा सारा पार्टनरशिप बेस्ड है. So we have a different model with a partner जहाँ पे we put out a hurdle rate and then that risk mitigation is done. And then उसके बाद वो जो pool का पैसा होता है then it gets dispersed to large number of borrowers. And first we ensure कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, चाहे वो P2P का हो, चाहे को-लेंडर पार्टनर का हो या बैंक्स का हो, उसका पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे देते हैं, एंड वट एवर द मार्जिन वी रिटेन फॉर आवर कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस बिजनेस. दिस इज द प्रोडक्ट. ओके, we try to build our product very simple, understanding from the customer perspective. as तो हमने एक हमारा ग्रोथ प्लान है, 1 year, 2 year, 3 years का ग्रोथ प्लान है, 11-13% का है. एंड दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, 13 years 1 लाख रुपया, 39,000. Then we have a monthly interest plan, 10.25 going up to 12.25. उसमें minimum investment is 1 lakh. And then we have a flexible where you can put out money anytime, and T+2 days में you can withdraw. That is 10% per annum. Yeah, that is it. Thank you so much. So if you have any questions or borrower कौन है? So borrower जो है, end borrower is a retail borrower. So it could be a merchant, it could be a merchant, it could be a salaried borrower. It could be a. So are you also associated with Amazon? No, we are not associated with Amazon, but we are associated with checkbook हो गया, True Credit है. So they have millions of customers. We have Bharat Pay also. So merchant loan हम करते हैं. The loan are being based on EMI product only, or so there could be a EMI product. जैसे हमारा एक पार्टनर है जो सैलरी एडवांस का लोन है उसका, राइट. सो जनरली क्या होता है कि बैंक में ना लेंडिंग कैटेगरी होती है. अगर आप कैट ए में हो, फॉर एग्जांपल अगर आप TCS में हो, राइट, तो 9.99 सबके लिए, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, राइट. बट जो लोग SMEs में काम करते हैं, आपके ऑफिस में कोई स्टाफ होगा, वहाँ पे बैंक लोन नहीं देता है, बिकॉज दे डोंट फॉल अंडर बैंक कैटेगरी. सो वहाँ पे जो लोन देते हैं NBFCs देते हैं, राइट. सो इसमें एक जो हमारी एक पार्टनर है, देयर वी हैव, वो 45 डेज का लोन देता है. वो सिर्फ 500 रुपीज चार्ज करता है, नो इंटरेस्ट, OD, एंड वी कलेक्ट दिस फ्रॉम दी कंपनी. अगर उसने पैसा नहीं दिया तो कंपनी हमें पैसा देगी. ऐसे भी कलेक्शन कंपनी के थ्रू होता है. बट दैट 500 रुपीज, 20,000 rupees, 20,000 rupees for 45 days, 500 रुपए is 30% ROI. So that is some model. Then we have bullet payment also loans. We have daily loans, EDI based loan. We have EMI based loan. So we have all. We try to build all the mix is there. And what we are looking at कि basically scale कहाँ से आएगा. So सिक्योरिटी भी जरूरी है ना. स्केल तो आज आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन सामने सिक्योरिटी. अभी आप जैसे बता रहे हैं कि 10% आप लिक्विड फंड में दे रहे हैं, वही कोई P2P है वो 7 से 8% में भी दे रहा है. तो आप कुछ ज्यादा दे रहे हो तो आपका थोड़ा रिस्क पोर्शन भी ज्यादा हो सकता है. The only answer to all this is pricing. Okay. So your pricing will determine आप मतलब सब प्राइम को भी लोन दे सकते हैं. इंडिया में जितना आपका रिस्क ज्यादा रहेगा उतना आपका
प्रोपोर्शनेट So इंटरेस्ट रेट भी that ज़्यादा this हो is what सकता है, I'll ये मैं give you समझ one सकता data. हूँ। I'll give you one data. So इंडिया में रिटेल लेंडिंग का जो मार्केट है सारे बैंक्स का और NBFC का, you know how much is that? Any idea? रिटेल लेंडिंग का it's 89 लाख करोड़, उसमें पर्सनल लोन है 10 लाख करोड़, और उसमें जो प्राइम के नीचे वाले हैं that percentage is 45.4%. हमारे देश में प्राइम बहुत कम लोग हैं, and if you think that subprime or near prime borrower are the bad borrower, then the data is clear. You have to relook the credit bureau data. It said that जो new to credit हैं borrower, they are performing much better than those who have a vintage. It has changed the psychology. आप नए बंदे से जो यंग जनरेशन है वो तो दिन रात उसी में रहता है कि मेरा आज का क्रेडिट स्कोर 5 से बढ़ गया. So if you are pricing it right, I think the risk will be taken care of. But pricing model खराब है, तो आप किसी भी कैटेगरी में, आप तो लो रिस्क कैटेगरी में भी पैसा हिट हो सकता है. किसी भी फंड का लो